Jai Swaminarayan. Today we will continue with the chapter number 1, Fundamentals of Remote Sensing. Okay. Classification of sensors. The sensors measure the intensity of reflected energy under each pixel. Okay. For every pixel, separate sensor is provided. Sensors measure the intensity of the reflected energy under each pixel. Sensors क्या करता है? Intensity of reflected energy जो भी है, okay, वो measure करता है under each pixel. For each pixel, separate sensor is provided. एवरी पिक्सल के लिए एक सेपरेट सेंसर होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है. ओके. ए सिंगल सीन और इमेज में कंप्रेस ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स. ए सिंगल सीन और इमेज जो भी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल होता है. दैट मीन्स मिलियंस ऑफ पिक्सल से एक इमेज बनता है. 1 megapixel is equal to 10⁶ pixels is equal to 10⁶ sensors. These sensors may be optical type. Second one is detector with electronic circuit, CCD. Meaning of CCD is charge coupled detector. The sensors are characterized by spatial resolution, then spectral resolution, radiometric resolution, by type of satellite. Polar or equatorial will decide temporal resolution of the images. Passive sensors. These sensors may detect natural energy. Okay. Natural energy coming from the sun is reflected from the object is used to create the images of the earth surface. Okay. Natural energy में क्या आएगा? सन आएगा. तो सन में से जो भी एनर्जी आती है वो ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है. वो जो भी सेंसर है, पैसिव सेंसर, वो इमेजेस की एनर्जी जो भी है वो कलेक्ट करता है. रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो कलेक्ट करता है और उसपे से एक इमेज बनती है. ईच ऑब्जेक्ट एमिट्स सम एनर्जी इन थर्मल और माइक्रोवेव रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी बाय द ऑब्जेक्ट इज नेचुरल. Intensity of thermal energy is varying for different objects. Intensity of thermal energy है वो varying होती है, different object के लिए वो vary होती है. The sensors are thermal energy for imaging. Then next one is active sensors. Sensors carry on source of energy which is released by the sensor to earth at the time of imaging, and sensor measures that reflected energy from the earth features. For example, आप कैमरा ले लो तो उसमें फ्लैशलाइट होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको अंधेरे में कोई फोटोग्राफ खींचना है तो वो अपनी ही फ्लैशलाइट यूज करके और जो भी कैमरा है वो यूज करके फोटो खींचेगा. ओके. तो उसको एक्टिव बोल सकते हैं. ओके. एक्टिव सेंसर्स. एग्जांपल ऑफ एक्टिव सेंसर इज कैमरा आल्सो. और सेंसर के पास खुद की एनर्जी होती है. वो एनर्जी का यूज करके वो जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे एमिट करेगा और वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्शन आएगा. So that is called active sensors. उसको सन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है. वो जो भी एनर्जी जो भी खुद की एनर्जी है उसका यूज करके ही वो इमेज क्रिएट करता है. Okay, that is called active sensors. Sensors carry on source of energy which is released by the sensors to the earth at the time of imaging,
and sensor measure that reflected energy from the earth features. It is like using flashlight in our cameras while taking the photographs at night. Radar is an example of active remote sensing or active sensing system. Radar system uses wavelengths from 1 cm to 133 cm of the spectrum. These energy waves released by the sensors propagate to the Earth's surface and bounce back to the satellite is measured and recorded by the sensors to create the image. That means जो भी energy waves है वो sensor खुद ही release करता है, okay, वो propagate करता है अर्थ सरफेस पे. दैट मीन्स अर्थ सरफेस पे वो जो भी अपनी एनर्जी है वो रिलीज करता है और वहां से वो कई एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी. some amount of energy is absorbed, some amount of energy is transmitted and some amount of energy reflected back. okay, तो जो भी रिफ्लेक्ट होती है उसको एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है वो एब्जॉर्ब करता है और इमेज क्रिएट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और मेजर करता है और इमेज क्रिएट करता है. न्यू पल्स पार्शल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय सेंसर्स टू क्रिएट द इमेजेस. New pulse partial of energy is released by the sensor only after bounce of last pulse is recorded. Then spatial resolution. It is measure of clarity of the image, or can be said that the minimum size of the object that can be clearly identified in the image. Okay. For example, आपने हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा लिया है. ओके, तो हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा है वो एरिया ज्यादा कवर करेगा पर उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं दिखेगा. ओके, it may be vary from 1 meter to several hundreds of meters. In 1 meter resolution image, small objects like trees, vehicles can easily be identified, which cannot be done in the images of 100 meter spatial resolution. Spatial resolution is governed by number of the pixels per IFOV. What is the meaning of IFOV? Instantaneous field of view. Every pixel color composite detector has got instantaneous field of view which measure ground area under each pixel. Each pixel is comprised of charge coupled detector abbreviated as CCD. Okay. Spatial resolution में क्या है? ऐसा डिस्कशन है कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर रिजोल्यूशन आप लेते हो तो छोटे से छोटा जो भी एरिया है जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा. ओके, बट जो 100 मीटर रिजोल्यूशन में आप कोई भी इमेज लोगे और फोटोग्राफ लोगे तो उसमें क्या होगा, छोटे से एरिया ज्यादा कवर होगा पर जो भी ऑब्जेक्ट है ओके वो एग्जैक्टली क्या है वो नहीं दिखेगा. ओके, क्या है ऑब्जेक्ट इंडिकेट नहीं होगा, पता नहीं चलेगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट है. दैट इज कॉल्ड स्पाइशियल रिजोल्यूशन. Spectral resolution. Spectral resolution, that means what? Sensors are designed to work only for certain wavelength of energy. That is, sensors can detect energy having certain wavelength range which is known as spectral band, noted as delta lambda, and central value of wave band is delta c.
सेंसर जो भी है वो डिजाइन किए जाता है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स वो सेंसर जो भी है वो फॉर एग्जांपल ये वेवलेंथ के लिए डिजाइन किया है। ओके, फॉर एग्जांपल एक्सरेज है, माइक्रोवेव्स है, तो वो जहाँ से भी वो एनर्जी आती है, ओके, वो वेवलेंथ की एनर्जी फॉर एग्जांपल है लाइट, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव रेज है, तो वो एनर्जी के जो वेवलेंथ की एनर्जी वही वो कैचअप करेगा। दैट मीन्स एक्सरे है तो उसके लिए डिजाइन किया है तो वही रेज पकड़ेगा और सेंस करेगा। ओके, देन जो भी रेज के लिए डिजाइन किया हुआ है, एक्सरे है, गामा रेज है, देन माइक्रोवेव्स है, ओके, तो जिसके लिए भी डिजाइन किया होता है वही उसके ही उसका जो भी एनर्जी है वही कैचअप करेगा। The sensor can detect energy having certain wavelength range which is known as spectral band, noted as delta lambda, and central value of wave band is lambda c. In multiple spectral remote sensing, more than one band is assigned to detectors. मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, वो एक से ज्यादा वो जो भी रेज है, वेवलेंथ रेज है हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, वो कैचअप करता है। दैट इज कॉल्ड मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। वन बैंड इज असाइन्ड टू डिटेक्टर्स। मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड इज यूज्ड टू डिफरेंट आइस एंड क्लाउड्स। There are three aspects of spectral resolution. First, central wavelength. Second, wave band. Lower and upper value of the wavelength of energy. Then, total number of the central bands of electromagnetic energy spectrum. The next one is radiometric resolution. There is separate sensor for each pixel. Sensor will measure intensity of energy for certain wavelength reflected from Earth under that pixel's field of view. सेंसर क्या करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी मेजर करता है फॉर सर्टेन वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ है जो भी रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द अर्थ, तो वो क्या करता है, इंटेंसिटी मेजर करता है एनर्जी। इट सेंसर इज कैलिब्रेटेड टू रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑन सर्टेन स्केल। If that has minimum value equal to 0 for no reflectance and 255 for total reflectance, then radiometric resolution is 8-bit. Similarly, for 7-bit radiometric resolution, the scale of recording will have range of 0 to 127. That means 2 raised to 7 is equal to 128, and for 6-bit resolution range will be 0 to 63, that is 2 raised to 6 is equal to 64, and so on. 8-bit resolution image will have better clarity than 7 or 6-bit resolution. Higher the resolution, better the image. And temporal resolution. टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल सेंसर्स के द्वारा एक बार इमेज लिया, देन थोड़े टाइम के बाद वापिस वो इमेज लेगा, देन तो क्या पता चलेगा, जो भी अर्थ सरफेस जो भी है उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ओके, स्टार्ट हुआ है, अभी जब भी फोटोग्राफ लिया है तभी स्टार्ट नहीं था, फिर थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट होता है, तो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वर्क,
हो रहा है तो उसका भी दिखाई देगा, देन कंप्लीशन के बाद भी दिखाई दे। तो जो भी अर्थ सरफेस पे चेंजेस होते हैं उसकी इमेजेस जो भी हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। उसमें क्या होता है, सेंसर थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसकी इमेजेस लेते रहता है कंटिन्यूसली, तो उससे पता चलता है कि अर्थ सरफेस में कौन कौन से चेंजेस है और सरफेस की एक्टिविटीज में कौन से चेंजेस है। The main advantage of remote sensing is its ability to take the images of Earth rapidly at minimum additional cost. Temporal resolution means the time interval between two successive images of same area provided by satellite sensors. IRC/LISS third satellite captures images of same area at an time interval of 24 days, hence temporal resolution is 24 days. This is also defined as repeativity. Synchronized satellites continuously view same area of Earth as rotation of Earth and satellite is same. Hence we get images continuously. So the temporal resolution may be 1 second or less than for synchronized satellites. In case of synchronized satellites, rotation of satellites is such that it views the Earth with the movement of the Sun. Movement of the Sun and the satellite is together around the Earth. Hence, the natural energy of the Sun is used, and for such satellites, temporal resolution will be around 24 hours. Use link for more information. यहाँ पे मैंने आपको लिंक्स दिया है जिसमें वीडियोस दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइटियल रिजोल्यूशन क्या है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या है, रेडियो रिजोल्यूशन क्या है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या है, तो इसके रिलेटेड वीडियोस है जो आप देख सकते हो, ओके, जिससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन